हेलो एवरीवन। तो आम स्कॉलर एंड आईडी स्टडी म्यूजिक तरफ समस्त को स्वागत जनावि। भावुची तीनोटी पार्ट सरी जाइए लॉज ऑफ मोशन चैप्टर रो। भावुची बहुत भल भाव बुझी सारी। तो आम जा पार्ट 4 नंबर को। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ इंपल्स विषय सब जानते। इंपल्स कौन तो चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड इंपल्स। चेंज इन मोमेंटम केंद्र बाहर फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो ये चेंज इन मोमेंटम विषय जो पढ़ुले तो आमर इनिशियल वेलोसिटी यू फाइनल वेलोसिटी v हुए। तो मोमेंटम होता एम यू और फाइनल मोमेंटम होची एम v। तो चेंज इन मोमेंटम बाहर करिए एम v माइनस एम यू। तो इंपल्स विषय जानते थे चेंज इन मोमेंटम। इंपल्स कौन पढ़ते इंपल्स करते कौन ए लार्ज फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी फॉर ए शॉर्ट टाइम। कम समय बहुत कम समय ऊपर जो गोटे लार्ज फोर्स एक्ट करुच्ची से गोटे इम्पल्सिव फोर्स एक्ट करुच्ची। तो आमर जो मोमेंटम चेंज होची चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड इम्पल्स। तो न्यूटन का सेकंड लॉ हमको कही जे फोर्स रो डेफिनेशन फोर्स इज इक्वल टू एम ए। इम्पल्स पढ़ते इम्पल्स रो डायमेंशन पढ़ते तार आमर यूनिट पढ़ते। तो इम्पल्स विषय तो बेसिक फंडामेंटल क्लियर हो सारी। तो पूर्व पार्ट रे जो देखी ना देखीदब। तो आज पढ़ा इम्पल्स रो एप्लिकेशन। इम्पल्स टा कोड कोडी प्रयोग करा जाउछि। इम्पल्स जो कोड कोडी प्रयोग करा होछि अदर एप्लिकेशन गुडी कौन। तो देखो फर्स्ट एप्लिकेशन होछि ए क्रिकेट प्लेयर लोअर हिज हैंड्स व्हाइल कैचिंग ए बॉल। When a ball is caught, the impulse is equal to product of the force exerted by a ball and time taken to complete catch. By moving the hands backward, the cricketer increased the time of catch so that the force exerted on his hands become much smaller and it doesn't hurt him. तो जिते बेले देखिबा गोटे क्रिकेट खिलाड़ी जेतबेले गोटे बैट्समैन बैट बॉल टाको बाडा देछि तो सेते बेले कैच टे उठी जाई। तो कैच टे जेतबेले गोटे फील्डर ताको धरुछि तो क्रिकेटर कैच धरुछि बहुत ऊपर आस्तिबो। तो देखो कैच टा कमती हातरो तळु पाणी। एठी प्रश्न हो जदि तळु को न आनी कि डायरेक्ट कैच टा को धरि पडिबो तो कौन हम तलू को कहीं आणुचे। तो देखो एठी होची जेते बेले बॉल टा ऊपर आसुची तो डायरेक्ट जेते आसीबो तो हमर जन इंपल्स होची कोन फोर्स इनटू टाइम। तो फोर्स जो दोची कहि देली इंपल्स फोर्स इंपल्स इज इक्वल टू एफ इनटू टी। तो इंपल्स टा को बा चेंज इन मोमेंट टा सदा बेले समान जेते आसुची। तो ये चेंज इन मोमेंट टा समान करिया पई एफ और टी परस्पर एफ इज इक्वल टू जे बाय टी। टी आउ ए परस्पर इनवर्सली वैरीज करूची जेतले दी समय जते टाइम टा जते कम रहइबो फोर्स सेते अधिक पड़िबो। तो टाइम टा को बढ़ेबा पई हमर जते टाइम टा बढ़िबो सेते इंपल्सिव फोर्स टा जो हा द्वारा बॉल द्वारा जो हाथ को जो हमर फोर्स टा दबो से फोर्स टा रिएक्शन फोर्स टा अधिक होई जो। तो टाइम टा को इंक्रीज करया पई क्रिकेट प्लेयर कोन करे तळ को हाथ आने। तो से क्रिकेट प्लेयर लोअर हिज हैंड्स क्रिकेट प्लेयर हाथटा को तळु आने केतबेले ना व्हाइल कैचिंग ए बॉल जेतबेले बॉल टा कैच करे काहे कि ना व्हेन ए बॉल इज कॉट जेतबेले से बॉल टा को धरी पकाए देन द इंपल्स इज इक्वल टू द इंपल्स कोन हबो प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉल। इंपल्स टा कोन फोर्स इनटू टाइम। तो फोर्स कहा फोर्स टा ना एक्सर्टेड बाय बॉल जो बॉल जो धरी पकेयो बॉल टा हाथ को जो फोर्स टा दबो सही फोर्स into and time taken to complete catch धरिया पई जति टाइम टेकन हैला। तो बॉल एटी फोर्स दोची फोर्स इनटू टाइम टेकन इंपल्स बाय मूविंग द हैंड्स बैकवर्ड जेतले हैंड्स टाको बैकवर्ड करूचे द क्रिकेटर इंक्रीज द टाइम ऑफ क्रिकेटर कोन करूची कैच टाइम टाको बढ़े दोची जा पर कोन होची सो दैट द फोर्स एक्सर्टेड ऑन हिज हैंड्स बिकम मच स्मॉलर। तो टाइम टा बढ़ी जाउची सेता बेले फोर्स टा हे जाउची कमी जाउची। तो टाइम बढ़ले फोर्स कमी जो जा फल कोन होची इट डजंट हर्ट हाथ को आघात लागबो नै। ओके तो एप्लीकेशन ऑफ इंपल्स फर्स्ट होला। नेक्स्ट सेकंड एप्लीकेशन ए पर्सन फॉलिंग फ्रॉम ए सर्टेन हाइट्स receives more injuries when he falls on a cemented floor than he falls on a heap of sand.
In both cases, the impulse or the total change in momentum is same. On the cemented floor, the person is stopped suddenly, so the cemented floor exerted large force of reaction, causing him severe injuries. When the person falls on a heap of sand, it takes longer time to stop, so that this decreases force exerted by the floor on the person. ତ କିଛି ଦୂରତାରୁ ଗୋଟେ ମହଲା ଛାତ ମନେ କରିଥିବ କି ଦି ମହଲା ଛାତ ହେଇଥିବ ତ ଫଲ୍ସ ପଡ଼ିବ ତଳକୁ ତ ଜଣେ ପଡ଼ିବ ସିମେଣ୍ଟେଡ୍ ଫ୍ଲୋରରେ ଆଉ ଜଣେ ପଡ଼ିବ ହିପ୍ ଅଫ୍ ସ୍ୟାଣ୍ଡରେ ବାଲି କଥା ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିବ ତ ମୋର ଇଞ୍ଜୁରି କୋଉଠି ହବ ଭେରି ଗୁଡ୍ ସିମେଣ୍ଟେଡ୍ ଫ୍ଲୋରରେ ସିମେଣ୍ଟ ଫ୍ଲୋରରେ ପଡ଼ିଲେ ମୋର ଇଞ୍ଜୁରି ହବ ବଟ୍ ହିପ୍ ଅଫ୍ ସ୍ୟାଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିଲେ ସେତେ ଇଞ୍ଜୁରି ହବ ନାହିଁ ତ କାହିଁକି ହୁଏନି ଦେଖ ଦିଟା ଆଗରେ ସିମେଣ୍ଟେଡ୍ ଫ୍ଲୋରରେ ପଡୁଛି ଆଉ ହିପ୍ ଅଫ୍ ସ୍ୟାଣ୍ଡରେ ପଡୁଛି ଯେତେବେଳେ ଦିଟା ଆଗରେ ପଡୁଛି ତ impulse বা change in momentum ତ ଦିଟା ପାଇଁ ସେମ୍ ହବ ମାସ୍ ଏଣ୍ଡ ଭେଲୋସିଟି ନା ସେମ୍ ଭେଲୋସିଟିରେ ଆସୁଛି ସେମ୍ ଭେଲୋସିଟି ଆଉ ସେମ୍ ମାସ୍ ରେ ପଡୁଛି ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ ପଡି ସାରିବ ତ ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଯୋଉଠି ପଡିବ ଫ୍ଲୋରଟା ସେଠି କ'ଣ ହଉଛି ଫୋର୍ସ ଦବ ସିମେଣ୍ଟ ଫୋର୍ସ ଯେତେବେଳେ ଦବ ସେଠି ସିମେଣ୍ଟରେ ପଡିବ ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ହବ ତାର ଇମ୍ପଲ୍ସ ଟାଇମ୍ ଟେକେନ୍ଟା ବହୁତ କମ୍ ରହୁଛି ତେଣୁ ସେଠି ଫୋର୍ସଟା ଅଧିକ ପଡିବ ଯୋଉଥିପାଇଁ ସେଭେରାଲ ଇଞ୍ଜୁରିଜ୍ ହେଇଯିବ ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ ହିପ୍ ଅଫ୍ ସ୍ୟାଣ୍ଡରେ ପଡିବ ତ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହଉଛି ତଳକୁ ପଶ୍ଚିତ ଟାଇମ୍ ଟେକେନ୍ ଯେତେବେଳେ ତଳକୁ ଗୋଡ଼ ପଡ଼ିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଳକୁ ଏ ଟାଇମ୍ଟା ଟିକେ ଆଗରେ ବଢ଼ିଯିବ ଯେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ଟା ବଢ଼ିଯିବ ତ ସେଇ ଫୋର୍ସଟା exerted by the hip of sand तो फोर्स दबा hip of sand ଟା ସେତେବେଳେ ଫୋର୍ସଟା କମିଯିବ ଯାହାଫଳରେ କିଛି ଇଞ୍ଜୁରି ହବ ସେଥିପାଇଁ କହିଲା a person falling from a certain height ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ person certain height ରୁ ପଡୁଛି receives more injuries when he falls on a cemented floor ସେତେବେଳେ cemented floor ରୁ ପଡୁଛି ସେତେବେଳେ more injury ହଉଛି than he falls on a heap of sand heap of sand ରେ ପଡିବା ଠାରୁ more injury ହଉଛି ଆମର cemented floor ରେ in both cases रे impulse or the total change in momentum is same dita case रे momentum change in momentum but impulse same रहता है the cemented floor the person is stopped suddenly संगे संगे रह जाए जहाँ फल कौन हुए the cemented floor exerted a large force कहीं ना less time बहुत कम समय रे large force देला causing him severe injuries when the person falls on a heap of sand ଯେତେବେଳେ heap of sand ରେ ପଡୁଛି it takes longer time to stop so that this decreases force तो ଯେତେବେଳେ longer time ନେଉଛି ଗୋଟେ heap of sand ରେ ପଡିଲେ time ଟା ଟିକେ longer ହେଇଯାଉଛି ଯାହା ଫଳରେ force ଟା decrease ହେଇଯାଉଛି by the floor ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ force ଦଉଛି decrease ହେଇଯାଉଛି ଯାହା ଫଳରେ person କୁ ଆଘାତ ହଉ ନାହିଁ okay ତ next ଆମେ problem ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କରିବା ଇମ୍ପଲ୍ସ ବେସିସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଇମ୍ପଲ୍ସ ବେସିସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ଯିବା ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଦେଖିବା a cricket ball of mass 150 gram moving with a velocity of 15 meter per second is brought to rest by a player in 0.05 second calculate the impulse and average force exerted by the players ବୁଝିପାରିଲେ କିଛି ଗୋଟେ କ୍ରିକେଟ ବଲ୍ ଯାର ମାସ୍ ଅଛି 150 ଗ୍ରାମ ତାକୁ ଆମେ କେଜିରେ କନଭର୍ଟ କରିବା ମୁଭିଂ ୱିଥ୍ ଏ ଭେଲୋସିଟି 15 ମିଟର per second ତ ବଲ୍ଟି ଭେଲୋସିଟି ଯାଉଛି କେତେ 15 ମିଟର per second ରୁ ଅଧିକ ହେଉଛି ବ୍ରଟ୍ ଟୁ ରେଷ୍ଟ ତ ବାଡି ଦେଇଛି ତ ବଲ୍ଟା ଯାଉଛି ତ ରେଷ୍ଟ କଣ୍ଡିସନକୁ ଆସିଛି ତାମାନେ ଏଠି ଦୁଇଟା ଭେଲୋସିଟି ଆସିଛି ଇନିशिয়াল ଭେଲୋସିଟି ଆଉ ଫାଇନାଲ ଭେଲୋସିଟି ଇନିशिয়াଲ ଭେଲୋସିଟି u फाइनल वेलोसिटी होची रेस्ट माने 0 बाय ए प्लेयर ଗୋଟେ ପ୍ଲେୟାର ଦ୍ୱାରା in 0.05 सेकंड 0.05 सेकंड माने ଯେତେବେଳେ ବଲ୍ ଟି ଯାଉଛି ତ ଏତିକି ସ୍ପିଡ୍ ରେ ଯାଉଛି ତ ଯେତେବେଳେ ପ୍ଲେୟାର ଧରି ପକେଇଛି 0.05 सेकंड ରେ ଧରି ପକେଇଛି ତ ରେଷ୍ଟ ହେଇ ଯାଇଛି नाउ इन दिस केस now calculate impulse बाहर करिया and average force exerted by the player impulse बाहर करिया ଆଉ ସେ ପ୍ଲେୟାର କେତେ फोर्स ଦଉଛି ସେ फोर्स ଟା ବାହାର କरिया तो प्रथम सॉल्यूशन करिया तो प्रॉब्लम करिया पूरा प्रथम कौन दे देखिया तो मास ऑफ बॉल तो m देछि m होस केते 150 ग्राम तो अब कौन करिया मास टा केजी रे कन्वर्ट करिया
So is equal to 150 by 1000 kg is equal to ଶୂନ ଶୂନ କାଟିଦିଅ କାଟିଦେଲେ ଆମର ଆସିବ 100 0.15 kg तो मास of ହେଲା 0.15 ଆଉ कोन ଦେଇଛି 15 मीटर पर सेकंड एट इनिशियल वेलोसिटी u is equal to 15 मीटर पर सेकंड फाइनल वेलोसिटी v is equal to 0 जेतु रेस्ट कंडीशन को आसी छेरी ଆଉ टाइम ଦେଇଛି t is equal to 0.05 सेकंड ओके काम को बाहर करबा अछि इंपल्स तो इंपल्स कोन बाहर करो इंपल्स जानते केते ना चेंज इन मोमेंटम impulse होची f into t f into t तो f तो देनी t अवश्य देची बट f देनी तेनो करी हमरे impulse माने आउट कोन चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू impulse पढ़चे न्यूटन का सेकंड लॉ कोन पढ़चे f इज इक्वल टू dp by dt इज इक्वल टू ma तो चेंज इन मोमेंटम जगह हम पढ़ते impulse पढ़ते कोन हम चेंज इन मोमेंटम ता होची कोन impulse तो समान केंगेटी कोन चेंज इन मोमेंटम हला dp is equal to f dt dp हो जे हमर चेंज इन मोमेंटम स्मॉल चेंज इन मोमेंटम is equal to f into small time force into time तो चेंज इन मोमेंटम ता impulse सहित समान f into dt हो जे कोन impulse तो एठी चेंज इन मोमेंटम केन बाहर करिया हम जानचे चेंज इन वेलोसिटी इन v minus u फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी चेंज इन impulse चेंज इन मोमेंटम कोन फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम मोमेंट परिवर्तन संवेग परिवर्तन कोन फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम कोन mv मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी तो इज इक्वल टू तो m जदि कॉमन है जा v minus u m जगह पके दियो केते हमर 0.15 होल इनटू v हला 0 u हला हमर 15 तो या सिवरी 15 by 100 into minus 15 तो या सिवरी हमर minus 2.25 न्यूटन into second impulse unit कोन न्यूटन into second and force into time न्यूटन into second तो minus 2.25 न्यूटन into second impulse आसला तो आ कोन बाहर करिया किछ नै बहुत सहज प्रत्येकटा को प्रैक्टिस करो कहीं पता रहे practice is everything without practice nothing can be done practice makes a man be perfect तो practice करो practice कले सब हो ओके जेते प्रॉब्लम दे तो किछ नै प्रॉब्लम मोर कोन कोन डाटा अछि लिखि दलो तापर जोटा बाहरिबो ता पय फार्मूला कोन से फार्मूला डायरेक्ट जदि नथिबो इनडायरेक्टली बाहर करिवो ओके तो हम कोन करे एवरेज फोर्स एवरेज फोर्स कोन हम जानचे इंपल्स j is equal to ft ओके तो इंपल्स जानचे टाइम जानचे तो फोर्स केता हबो j by t बट लेखि दो इंपल्स by टाइम इंपल्स वाला केते -2.25 टाइम तो हम देछि 0.05 तो is equal to approximately actually -45 न्यूटन तो impulse वाला -2.25 न्यूटन into second and the average force value force exerted by the flares केते आसीबो -45 न्यूटन तो वर्तमान हम जिबा नेक्स्ट प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम नंबर 2 की जिबा तो प्रॉब्लम नंबर 2 होची कोन while launching a rocket of mass 2 into 10 to the power 4 kg a force of 5 into 10 to the power 5 newton is applied for 20 seconds
Now find out the calculate the velocity attained by the rocket at the end of 20 second. ବୁଝିପାରିଲ ଦେଖ while launching a rocket ଯେତେବେଳେ launch ହଉଛି ତ mass rocket ର mass ଟା ହଉଛି 2 into 10 to the power 4 kg mass ପାଇଗଲା and the force of the force ଦିଆଗଲା 5 into 10 to the power 5 न्यूटन रॉकेट को फोर्स जो गैस तरह जाଉଛି तो बिना फोर्स तो रॉकेट जाई परिबन ना मूविंग कर परिबन तो से रॉकेट जो एते की मास रे फोर्स ता दिया होची एते फोर्स ता दिया 5 into 10 to the 5 न्यूटन इज अप्लाई देते ना 20 सेकंड पे अप्लाई होची तो वर्तमान बात करें कैलकुलेट द वेलोसिटी अटेन्ड बाय द रॉकेट एट द एंड ऑफ 20 सेकंड 20 सेकंड ପରେ ତ ରକେଟ ଟା କେତେ ବାଟ ଯାଇଛି ବୁଝିପାରିଲେ फोर्स दिगला एतिकी मास रॉकेट एतिक अछि तो फोर्स दिगला एतिकी तो 20 सेकंड पर्यंत फोर्स अप्लाई हेछि तो फोर्स 20 सेकंड पर्यंत अप्लाई हला परे तो रॉकेट टा केते बाटो जाइछि किछि नै आगो डाटा कोन देछि दत्त देछि देखिलो तो फर्स्ट देछि मास ऑफ रॉकेट तो हियर मास ऑफ रॉकेट हमर होछि 2 into 10 to the power 4 केजी केजी अछि कि दरकार नै ग्राम थिला हम केजी कन्वर्ट करता बट केजी अछि दरकार नै आ कोन देछि फोर्स फोर्स देछि केते 5 into 10 to the power 5 न्यूटन आ कोन देछि अप्लाई करला 20 सेकंड 20 सेकंड टाइम तो इटी u इनिशियल वेलोसिटी u होछि 0 फाइनल वेलोसिटी हमको बाहर करके अछि टाइम देछि 20 सेकंड ओके तो हमको एटू v बाहर करिवार अछि जनरली v बाहर करि परिबा आराम से आगे देखो इंपल्स बाहर कर दियो तो इंपल्स चेंज इन मोमेंटम बाहर कर दियो इंपल्स फर्स्ट बाहर कर दियो इंपल्स इंपल्स कोन f into t ओके तो इंपल्स f into t केता हो तो f कहता है हमारा 5 into 10 to the power 5 न्यूटन into t हला 20 न्यूटन into सेकंड तो इंपल्स बाहर पड़ला तो तापर देखो कोन बाहर करे अच्छा इंपल्स ता कहा सहित समान है ना इंपल्स ता इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम तर चेंज इन मोमेंटम कोन जाने से mv minus mu we know that impulse is equal to change in momentum तो impulse is equal to impulse कहते हैं तो 5 into 10 to the power 5 न्यूटन into 20 एरिया पे न्यूटन लिखो लास्ट न्यूटन सेकंड into 20 न्यूटन सेकंड यूनिट लिखना है is equal to change in momentum लिख करिया mv minus mu ओके तो देखो this implies that 5 into 10 to the power 5 into 20 is equal to m कॉमन निकले v minus u is equal m ता हमर केते देछि 2 into 10 to the power 4 केजी सकते v पहले v minus u पहले 0 तो बाहर कर दो तो v टा बाहर पड़ केता हो तो v is equal to लिख दो 2 into 10 to the power 4 v minus 0 v is equal to 5 into 10 to the power 5 into 20 तो v कितना हो 5 into 10 to the power 5 into 20 by 2 into 10 to the power 4 10 to the power 4 गोटे कटि जीवो 2 10 कटि जीवो 5 25 दुने 50 तो 500 असला मीटर तो असला हमरो 500 वेलोसिटी मीटर पर सेकंड by v is equal to हमारा 500 मीटर पर सेकंड तो ये हला वेलोसिटी मीटर को 500 मीटर पर सेकंड जीवो तो वर्तमान हमें थर्ड प्रॉब्लम जीवा आउट प्रॉब्लम कर दो बरा वर्तमान पर प्रॉब्लम नंबर 3
तो प्रॉब्लम नंबर 3 हमर होची तो 3 कहली a body of mass 0.25 kg moving with velocity 12 meter per second is stopped. Their mass 0.25 kg moving with velocity 12 meter per second रे जाउची is stopped रही जाइची by applying a force. तमे कोन भाबो गोटे बॉडी ते जाउची वेलोसिटी होची 12 मीटर पर सेकंड तो एटा हमर आसी बारी कोन इनिशियल वेलोसिटी ला जो u 12 मीटर पर सेकंड तो एठी आकु हठात गोटे फोर्स रिटार्डेशन फोर्स पछुकु गोटे फोर्स रे जाउची तो पछुकु फोर्स देइची केते 0.6 न्यूटन दैट इज फोर्स नंबर माइनस आसी तो वस्तु एपटे सीधा रे जाउची तो एपट गोटे फोर्स टे एक्ट करिची जा फल से वस्तु दे रही जाइछ बॉडी टी तो कहते हैं -0.6 न्यूटन तो कैलकुलेट द टाइम टेकन टू स्टॉप द बॉडी तो एठू वस्तुरा जाउछ केते हमर बॉडीटा 12 मीटर पर सेकंड रे एम होची हमर 0.25 केजी 12 मीटर पर सेकंड जाउची तो एठी पहुंची छी एठी से रहि जाइछ तो न्यूटन केते 0.6 न्यूटन फोर्स अप्लाई हला पर एटा रहि जाइछ तो से कहै केते जो स्टॉप कैलकुलेट द टाइम तो जेतरे रहि जाइछ तो एठी दी जब को टाइम केते रहिछ अब हम टीटा बाहर करे ता सहित calculate impulse of the force the impulse बाहर करें impulse जे force into time तो force देछि टाइम इनटू करते तो हमको दरकार अछि टाइम तो लेखा सॉल्यूशन कोन लिखिबा जहा देछि बॉडी ऑफ मास 0.25 kg हियर मास इज इक्वल टू 0.25 kg तो kg देछि किछि कन्वर्ट करे दरकार नै आउ कोन देछि मूविंग विथ वेलोसिटी u इज इक्वल टू देखो u काहे गेला एडी मूविंग विथ वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकंड रे जाउची तापे फोर्स देबा दर से रहि जाउची तमन एटी इनिशियल वेलोसिटी होची 12 मीटर पर सेकंड एंड फाइनल वेलोसिटी होची v 0 तो रहि जाइছে तळे ता वेलोसिटी 0 हो जाइछ तो v इज इक्वल टू 0 आगुण बाहर करे तो फोर्स अप्लाई है जी रिटार्डेशन फोर्स केते हबो -0.6 न्यूटन हो जेतु बॉडी जो दिगल जाउछ जो डायरेक्शन है फोर्स तारा ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करछ तो 0.6 न्यूटन तो बाहर करिया हमको टाइम अच्छा टाइम बाहर करे पूर्वरु हमको एठी बाहर करिया पड़ियो ई बाहर करिया ए बाहर करिया पड़ियो एक्सेलरेशन दरकार है तो हमरो v - u t पके परिया हमरो जो न्यूटन गति समीकरण पके परिया तो लिखिबो वी नो from Newton's second law of motion कौन जानता F is equal to ma तो A is equal to F by m तो A is equal to F by m के A ला F ला -0.6 m ला 0.25 तो आपको कटाकटी कले हमर आसी जिवो 24 meter per second square minus 24 meter per second square तापर हमको दरकार है टी ठीक हम क्या v is equal to u plus t न्यूटन का फर्स्ट गति समीकरण फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन न्यूटन का from v is equal to u plus 80 हमको बात है t तो 80 is equal to v minus u 80 is equal to v minus u t is equal to असला v minus u by a तो v रो मूल्य केते अछि v 0 0 u केते u होछि 12 a होछि केते हमरा -24 तो -12 by -24 is equal to 1/2 is equal to 0.5 seconds. 0.5 second is equal to मतलब b minus u by a. Okay. Next, t बाहर पहला आपन बाहर पहला calculate the impulse. तो impulse बाहर करो हमने से impulse is equal to f into t. f हो कहते हैं
माइनस 0.6 इंटू टी है 0.5 तो आसी आमर 3 न्यूटन इंटू सेकेंड इक्वल्स आसो केते 3 न्यूटन इंटू सेकेंड ओके माइनस न्यूटन इंटू सेकेंड तो इम्पल्स बेसिक प्रॉब्लम तो बुझी पारल ओके तो तापर हम वर्तमान जीवा न्यूटन को सेकंड लॉ इम्पल्स तो सब वर्तमान क्लियर हे गला तापर हम एचएससी रो लॉज ऑफ मोशन रो एचएससी सिलेबस अनुसार तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमरो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन ओके तो जीवा हमरो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कौन थिला now first law of motion states that every body continues to its state of rest or uniform motion unless it is disturbed by an external force बिना बाह्य बल रे बिना अनबैलेंस फोर्स रे कोनोसी बाहर बल प्रयोग न हेले से प्रत्येक ऑल रेस्ट कंडीशन रे थिला रेस्ट जो स्टेट रे स्टेट ऑफ रेस्ट जो बॉडी गुडा असन से सब स्टेट ऑफ रेस्ट रे आ जो स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन रे सब यूनिफॉर्म मोशन रे कपि करते जे पर्यंत बाहर कोनोसी बल प्रयोग न होइछ तो सेकंड लॉ कहले कोन न्यूटन्स ना रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आ सहित एफ सहित momentum the rate of change of momentum dp by dt that is proportional to f थिला तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहले ये कोन सपोज ये गोटे बॉडी टे अछि ओके ये बॉडी टा कोला आ गोटे बॉडी को धक्का दउछि कि फोर्स प्रयोग करूछि ये जदी ए बॉडी को फोर्स प्रयोग करूछि तो ये मध्य आकु गोटे फोर्स दबो जदि ये गोटे फोर्स ताकू प्रयोग अन्य बॉडी की दउछि धर एटा ए बॉडी एटा हला धर बी बॉडी ये जदि आकू गोटे फोर्स देला तो को फोर्स दबो ए देला आकू जो देला ए देला बी कोन एफ ए बॉडी देला कहा को बी एफ ए बी ये सेमती आकू गोटे फोर्स दबो एफ बी ए फोर्स एक्सर्टेड बाय ए ऑन बी बी ऊपर फोर्स दउछि ये मध्य ए ऊपर गोटे फोर्स दबो बोली न्यूटन कहले तमे जदि 10 टका नै कि दुकान नु गला तो 10 टका नै छै माने से 10 टका रे ही जिंस दबो तो ए जो फोर्स डाला सपोज फर्स्ट ये देला फोर्स जे फर्स्ट देला फोर्स ए जो बट्टा देला एटा कहंती एक्शन फोर्स तो ये जो आकु जो बॉडी फोर्स दबो एटा कहंती रिएक्शन फोर्स जे फास्ट फोर्स दबो दी जण से ताकू गोटे बाडे से मध्य तुमको बाडे पता रिएक्शन दो जदी जणे जदी इनपुट ए काम दो तो सांगे सांगे हमें ताकू मार दो मसार काम करता से एक्शन देला तो हम फटा सांगे सांगे तापर को रिएक्शन फोर्स देले तो जे फास्ट फोर्स देला सेटा ला एक्शन तो से एक्शन को जे रिप्लाई देला सेकंड देला से दबो रिएक्शन तो प्रत्येक बॉडी प्रत्येक टू बॉडीज दीटा बॉडी भीतर से कहले जदी गोटे बॉडी आ गोटे बॉडी को किसी फोर्स दउछि ताको एक्शन फोर्स कहंदी से मध्य तो सेकंड बॉडी को से मध्य फोर्स दउ ताको रिएक्शन फोर्स कहंदी फिर सेती कहन से कहले ये जति फोर्स दबो सपोज जे 10 न्यूटन फोर्स देला का ऊपर बी बॉडी ऊपर 10 न्यूटन फोर्स दउछि तो से कोन करियो बी मध्य ए ऊपर 10 न्यूटन फोर्स दबो बट हमें जानि जे फोर्स होछि वेक्टर क्वांटिटी फोर्स गोटे डायरेक्शन रहइबो तो ये जो फोर्स देला सपोज ये मारा देला ये ला ए एटा हला सपोज ठीक तो ये जो फोर्स टा आकु दबो ए फोर्स टा कोड जो ए आडे गला ये जो फोर्स आकु दबो ये होछि एपड को ना गोटे दिगर दबो के एपड ये जो फोर्स देला एपड को देला ये जो फोर्स देला एपड के फोर्स देला ए देला एफ ए देला कहा को देला ना बी को देला एफ फोर्स एक्सर्टेड बाय ए ऑन बी
ये जो फोर्स बी जो आपको देला एटा होची एफ बी देला काहा को देला ना ए देला फोर्स एक्सर्टेड बाय बी ऑन ए तो ये जो फोर्स आउ ये जो फोर्स ये दीटा अगर फोर्स होची amount of magnitude amount of force is same but direction opposite Newton cycle कहले two bodies जेता बेले when two bodies acted exerted by one another by a force then say force ये जो force action force आउ से आउ ये जो बटा दबा reaction force ये होची same force action और reaction same force but direction of their forces is equal तो direction से force नंबर होची equal से कहले कोन कहले action और reaction जो दीटा force बाहर कहले because न्यूटन थर्ड लॉ रे कहले जे दीटा force बाहर कहले गोटे action force गोटे reaction force तो action and reaction forces are equal and opposite परस्पर direction is opposite but amount of force magnitude of force are equal सेटा से कहले से कोन कहले न्यूटन्स लॉ देखो this law states that now कोन अछि this law states that to every action there is an equal and opposite reaction प्रत्येक एक्शन के लिए जे फास्ट फोर्स प्रयोग कला प्रत्येक एक्शन रो रिएक्शन अछि 9th क्लास रे पढतलो ओडिया रे न्यूटन्स तृतीय नियम कोन पढले प्रत्येक क्रिया रो समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया थाए अर्थात this law states that to every action there is an equal and opposite reaction so this is Newton's third law of motion example करते हो जोटा कहितली तो this body A suppose this body लगे दियो this body B तो ये जितने बड़े A बटा B बड़ी गोटे फोर्स देला तो A डायरेक्शन में दबो तो दैट इज नेम इज F ये देला A देला जे देला तो फास्ट लेजो F F B फोर्स एक्सर्टेड बाय A ऑन B सेपड़ी B मध्य एक गोटे फोर्स दबो F B A कर दो फोर्स एक्सर्टेड बाय B ऑन A तो एठी काम करले एठारे काम करले अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड थर्ड लॉ अकॉर्डिंग टू Newton's third law of motion F AB is equal to F B. F force exerted by A on B is equal to force exerted by B on A but the direction of their force the magnitude like the तो same लिख दो the direction symbol देलो minus FAB is equal to minus FB. Let's consider two bodies A and B collide with each other and FAB is equal to force exerted by A on B. FB is equal to force exerted by B on A. So according to Newton's second law, second law of motion answer FAB is equal to FBA. The direction symbol दबो FAB is equal to minus FBA तो बुझतालो तो न्यूटन सेकंड लॉ आ किसी कम करिया इंपोर्टेंट की पॉइंट देखिया इंपोर्टेंट पॉइंट्स about Newton's third law of motion तो न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन रो किछि इंपोर्टेंट पॉइंट देखिबा तो इंपोर्टेंट पॉइंट हो जाउछि इंपोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन दिस लॉ रेफर्स फोर्स ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन मे बी मैकेनिकल ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रिकल एंड एनी अदर से कहते जो एक्शन रिएक्शन फोर्स ता सेटा को फोर्स है
सेमे भी मेकानिकल फोर्स हो पारे, ग्रेविटेशनल फोर्स हो पारे, इलेक्ट्रिकल फोर्स हो पारे, मैग्नेटिकल फोर्स हो पारे, जे कोन सा एनी अदर जे कोन फोर्स हो पारे। जो एक्शन रिएक्शन फोर्स टा जो यूरो नोर फिल्म मागले गोटे वस्तु आ गोटे वस्तु को फोर्स पकाउछि एक्शन, तो सेकंड वस्तु भी फर्स्ट वस्तु ऊपर कोन करछि रिएक्शन फोर्स होछि। तो से रिएक्शन फोर्स आ एक्शन फोर्स टा कोन कोन हो पारे। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स ऑल जे कोन फोर्स हो पारे, मेकानिकल फोर्स हो पारे, ग्रेविटेशनल फोर्स हो पारे, हमर इलेक्ट्रिकल फोर्स हो पारे, मैग्नेटिकल फोर्स हो पारे, जे कोन सा एनी अदर जे कोन फोर्स हो पारिबो। आ कोन कहले ना एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज एक्टिंग ऑन डिफरेंट बॉडीज। एक्शन और रिएक्शन फोर्स सदाबले डिफरेंट बॉडी ऊपर एक्ट करे। सपोज गोटे वस्तु ऊपर गोटे बॉडी ऊपर एक्शन और रिएक्शन अप्लाई करि परिबो, तो केमिति ना एई वस्तु ऊपर एक्शन फोर्स अप्लाई करि पारिबो, बट ये कौन करियो जे एक्शन आकु दबो फोर्स, तो ये कौन करियो आकु गोटे फोर्स तो रिएक्शन ताने कोन हला जे एक्शन और रिएक्शन फोर्स दीटा गोटे बॉडी ऊपर एक्ट करिवे ना, तो ये एक्ट करिवे टू डिफरेंट बॉडीज ऊपर एक्ट करिवे। एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज, अलग अलग बॉडी ऊपर एक्ट जदि एक्शन गोटे बॉडी ऊपर एक्ट करछे, रिएक्शन अन्य बॉडी ऊपर एक्ट करिवो। इफ दे एक्टेड ऑन सेम बॉडी, सपोज गोटे बॉडी ऊपर एक्शन और रिएक्शन एक्ट करे, सपोज काहे धरा ए आ ऊपर फोर्स ऑफ एक्शन एक्ट कला एंड फोर्स ऑफ रिएक्शन एक्ट कला, तो न्यूटन कोन क्वेश्चन ना, न्यूटन को कथटा भूल जाइछो हबे कोन कहले रिएक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, एक्शन और रिएक्शन जेटा सेम पुनी ऑपोजिट, तो रिएक्शन हला 10 न्यूटन, तो रिएक्शन हो भी -10 न्यूटन ऑपोजिट, तो दीटा का ऐड करते रिजल्टेंट फोर्स टा केते हो 0 हो। तेनु एक्शन और रिएक्शन फोर्स डज नॉट एक्ट अपॉन डोंट एक्ट अपॉन सेम बॉडीज, they act upon different bodies. So if they acted on same bodies, the resultant force will be zero resultant। जदि गोटे बॉडी पर एक्शन रिएक्शन पर एक्ट करंता तबे हमर रिजल्टेंट फोर्स टा जीरो हे जांता। थर्ड इंपोर्टेंट पॉइंट होची एक्शन एंड रिएक्शन कैन नॉट कैंसल ईच अदर। केबे भी हमको एक्शन रिएक्शन सेम बट डायरेक्शन अलग, तो डिफरेंट माने माइनस गोटे पॉजिटिव में गोटे नेगेटिव, न से माने केबे भी कैंसल हे परिबे नाही। काहे कि बिकॉज़ ऑल्दो द एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट, जदियो एक्शन रिएक्शन इक्वल और ऑपोजिट, तो ऑलवेज एक्टिंग ऑन डिफरेंट बॉडीज, तो से माने डिफरेंट बॉडीज ऊपर एक्ट करंती, सो दैट एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स could not equal, ओके, तो केबे भी इक्वल हे परिबे ना। तो दिस इज द इंपोर्टेंस पॉइंट अबाउट न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन सरी गला। तो वर्तमान आमे जिबा न्यूटन को थर्ड लॉ ऑफ मोशन किछि एग्जांपल। जिबा एग्जांपल ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो एग्जांपल ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज कोन बहुत गुड एग्जांपल अछि। देखो व्हाइल स्विमिंग ए पर्सन, जतरा जने पहुंचथिबो देखो हाथटा को कोन करथो एमति पछुको वाटर फोर्स देथिबो, एक्शन फोर्स पछुको देला, तो वाटर टा को मत सेटिक रिएक्शन फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन दो, तो सेटा अछि व्हाइल स्विमिंग ए पर्सन पुशेस वाटर इन हिज हैंड्स इन द बैकवर्ड, तो हैंड टा को करियो बैकवर्ड डायरेक्शन को करियो, जोटा कोनती एक्शन फोर्स। तो वाटर कोन दो वाटर इन टर्न, तो ए बदल रे वाटर कोन दबो पुशेस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ताको फॉरवर्ड डायरेक्शन टाइम, तो इट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। आमे जतरे पहरुचे तो हाथटा कोन करछे बैकवर्ड करछे, तो आमे देले वाटर ऊपर कोन देले वाटर ऊपर देले गोटे फोर्स एक्शन फोर्स देले बैकवर्ड, तो वाटर ता टर्न रे ता प्रतिबंध रे वाटर कोन करछे हमकु फॉरवर्ड फोर्स होटे दउछ, तो दैट इज कॉल्ड न्यूटन्स एग्जांपल ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन। आ गुड एग्जांपल हेतु रोटरी लॉन्च स्प्रिंकलर, देखो जतरा गोटे टेक्नोलॉजी लागितो एडा सब नोजल लागितो पानी बाहर करे, तो याडो पानीटा जाउछ वाटर टा जाउछ, ओके। द रिएक्शन द एक्शन ऑफ रोटरी लॉन्च स्प्रिंकलर, एटा हला रोटरी लॉन राउंड हेक बुलतो, लॉन मान जो घास पड़ जाय तो पानीटा चारिडे स्प्रे हेक पड़तो बुलतो, सेटा चारिडे स्प्रे हेक बुलतो। लॉन्च स्प्रिंकलर इज pushed on third law of motion, is based on third law of motion। रोटरी लॉन्च स्प्रिंकलर जो पानी चक्री वगैरह बुलतो सेते सब चारिपट सब वाटर स्प्रे होतो, सेटा होसी न्यूटन का थर्ड लॉ
पर बेस्ट हो गई आज वाटर इश्यूज आउट ऑफ द नोजल जो नोजल पाखु जाउची वाटर इश्यू करूची से समय कोन होची एक्जेक्ट एंड इक्वल एंड अपोजिट फोर्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन तो पछु को बैकवर्ड डायरेक्शन फोर्स दोची कॉजिंग द स्प्रिंकलर टू रोटेट जहार कारण स्प्रिंकलर कोन करची रोटेट करची इन द अपोजिट डायरेक्शन थस द वाटर इज स्कैटर्ड इन ऑल डायरेक्शन जो बढ़िया बे कंटिन्यू करला को वाटर टा कोन होची चारियाडे ऑल डायरेक्शन रे स्कैटरिंग हे करची ओके तो ये हला सेकंड एग्जांपल नन डाउट नाउ we can discuss our third example while working a place हम जानते हो न्यूटन कहले कोन action and reaction is equal and opposite if action and reaction are equal and opposite then how can we work अच्छा एडी प्रश्न करिवो how can we work तमे त चालू छे हम कोन करू छे गोड़ पकेले कोठी फुट पकेले कोठी ग्राउंड रे पकेले तो हमें एक्शन कोडी देले ग्राउंड तो केते परिमाण फोर्स देले जति मतलब 10 न्यूटन फोर्स देले ग्राउंड को देले 10 न्यूटन तो ग्राउंड कोन करियो न्यूटन को अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन ग्राउंड कोन करियो ठीक 10 न्यूटन फोर्स रिएक्शन करियो तो हमें ग्राउंड को देले 10 न्यूटन ग्राउंड देला हमको रिएक्शन करतला 10 न्यूटन पुनी अपोजिट डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में तो किसी असुविधा नहीं 20 न्यूटन हम जानले जाटन तो हमें देले 10 न्यूटन ग्राउंड देला हमको 10 न्यूटन तो पुनी नेगेटिव अपोजिट डायरेक्शन है तार दाटा कैंसिल है इसको ताता हम चली परिए बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन रे आसे सिंस एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट देन हाउ कैन वी वर्क केमती चालू छे ना मन एकदम जेता हम चालू छे कोन करछे हमें गोडा सीधा पकौ हमें ठीक स्लाइटली पकौ छे एफ से एमती पकौ छे एटा लाइक ग्राउंड तो किसी गोटे एंगल रे पकौछे स्केलर वेक्टर रे पड़तुवा रिजर्व कंपोनेंट्स रेजोल्यूशन वेक्टर पड़तुवा तो जेतले एटा पकौछे ग्राउंड रे तो एठी कोन होची फोर्सटा जब पाद पकौछे एटा तो आकु कोन करची गोटे वेट टान्स तो ये थीटा कंपोनेंट भाग हो जाउची इट्स ऑल्सो टू कंपोनेंट थीटा जो पड़ साइड ग्राउंड सो दैट एंगल पकले एमती पकले तो एटा दीटा कंपोनेंट है जाउची रेजोल्यूशन इफेक्ट रे पड़थिबो एटा होची कोन थीटा जो पुट रहला सेटा होची दोराटा होची हमर नॉर्मल रिएक्शन r एटा आछो r cos थीटा एटा आछो r रिजल्टेंट r sin थीटा ओके तो ये कोन कहूची r sin थीटा r sin थीटा हमकु while working we press the ground with other feet in backward direction the sound adjusted equal to opposite direction force the vertical component of the force balance at the weight the vertical component टा कोन हो जाउची हमर weight तळ दोसी weight द्वारा बैलेंस हो जाउची तो हमकु के सहायता को जेटी r cos थीटा r sin थीटा टा w mg w तळ बैक कला vertical component टा बैलेंस हो गेला ये जेती का से सेती गेला तो एटा जो पड़ला एटा कोटा हला r cos थीटा तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमको चलिया पई सहायता करछि से पई while working we press the ground action with your feet slightly in backward direction the ground exert an equal and opposite force ground हमको दोसी equal and opposite force on the vertical components of the force vertical components of reaction balance our weight द्वारा हम balance होछि और horizontal components enable to go forward horizontal force टा हमको आगु को नछि तो एकर पक्को जे स्लाइटली पक्को जे पाद साइड पकला को दीटा कंपोनेंट होछि ऊपर कंपोनेंट टा बैलेंस होछि जो स्लाइडिंग जाउछि ओरिजिनल कंपोनेंट टा आर cos ता हमको मूविंग फॉरवर्ड पई हेल्प करूछि तो से तो न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन रो एग्जांपल नोसन जेछि तो नेक्स्ट पढ़िबा नेक्स्ट चैप्टर रे बा नेक्स्ट वीडियो रे हम करिबा से न्यूटन को थर्ड लॉ टा और न्यूटन को फर्स्ट लॉ टा न्यूटन को सेकंड लॉ केमते डिराइव होस ए न्यूटन को एक्चुअली न्यूटन को लॉज ऑफ मोशन रे रियल लॉ ऑफ मोशन होची न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन बिकॉज़ न्यूटन सेकंड लॉ सब अछि अर्थात न्यूटन को सेकंड लॉ रु फर्स्ट लॉ में प्रूव करिया न्यूटन को सेकंड लॉ रु न्यूटन को थर्ड लॉ के बाहर करिया हमें नेक्स्ट वीडियो रहबा तर होसी टिल देन बाय बाय टेक केयर गुड डे।